आंसर दे पिले क्वेश्चन नंबर 1 देछि व्हाई फादर गिलिगन वाज वरी फादर गिलिगन कोन पे टाइट थिले से देछि तो क्लांत थिला हम को करबा ही वाज ओल्ड से वृद्धा थिले बोली ओके जय श्री राम ना he had been traveling से traveling करूथले he was taking care of his flock ना he was ill कोन हबरे नमस्ते कोन हबो सी he was taking care of the sick और flock नहीं sick person मान को से कोन करले केयर नथले नेक्स्ट देखो how did father Gilligan spend his day से तांकर दिन गुडाक किपरि स्पेंड करूथले बोली पचारछि preachings in his church reading religious texts attending to his sick parishioners na teaching the children किपरि से तांकर टाइम स्पेंड करूथले कोन हबो अटेंडिंग टू हिज सिक परिसनर नहीं तांकर जो सिक परिसनर जो माने थिले से मान को से अटेंड करथले आज टिके बिले हां से जो एरिया रे लोक मान को जाथले आज टिके करेंट जीवार अछि तोरे हमर पटे सेतमे टिके प्रॉब्लम होची क्लास ठीक से नहीं पारने ठीक से अनाउंस होची ओके एटा कोन हबो अटेंडिंग टू हिज सिक परिसनर what time of the day is refers to the month hours of eve आमे जदी एठरे month hour of eve कथा जदी कहबा ताले एटा को टाइम को रेफर करूची को टाइम को रिप्रेजेंट करूची month hours of eve को पिले को टाइम को रेफर करची रे इवनिंग नहीं गोटे मिनिट months hours of eve जदी हमें कहबा ताले कोन हबो अर्ली मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ना मिडनाइट कोन हबो रे वेरी गुड इवनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करूचे नहीं इवनिंग टाइम नेक्स्ट देखो व्हाट वाज फादर गिलिगन रिएक्शन व्हेन अनदर पोर मैन स्टैंड फॉर हिम फादर गिलिंगर कर रिएक्शन कोन थिला जते बेले जने अनदर पोर मैन ता पाखो को आस्थिले ही वाज हैप्पी से खुशी होइथिले ही वाज इंडिफरेंट तांकर किछि प्रतिक्रिया नथिला he was grieved से दुख करतले ना he was confused कोन हबो रे वेरी गुड कोन हबो he was grieved नहीं से दुख करले नेक्स्ट देखो what did father Gilligan say in his moment of despair ओके जते बेले से व्यक्ति जणक आस्थिले से समय से कोन कहछन्ती बोली प्रश्न करिछि राइट एठरे कोन हबो I have no rest no joy nor peace people die and die why does the happen to me एटा मो सहित कोन पई होउची ना सेमती I cannot go on मु जाई परिबि नै who will help me now मते के सहायता करी तणु कोन हबो गुड मॉर्निंग कोन हबो I have no rest nor joy and nor peace नहीं मोर हां I have no rest nor joy nor peace people die and die लोक माने एबे केवल कोन होचंती मरि जाउचंती मोर टिके हेले मते रेस्ट नाही टिके हेले मते खुशी नाही कि मु टिके हेले मते कोन करि पारनी माने मो लाइफ रे खुशी ही नाही रेस्ट नाही खुशी नाही पीपल लोकने केवल एठर मरछंती बोली से कहछि तापर देख व्हाट डिड फादर गिलिगन आस्क फॉर आफ्टर हिज आउटब्रस्ट कहले साधारणतः उत्तेजित अवस्था को आउटब्रस्ट कुआ जाय रागी जिबा एई उद्देश्य रे आउटब्रस्ट बोली शब्दटी व्यवहार करा जायते साधारणतः तणो जते बेले से रागी जायछंती तो से समय से कोन कहछंती से रेस्ट पय कहछंती खुशी पय कहछंती फॉरगिवनेस पय कहछंती ना स्ट्रेंथ पय कहछंती कोन हबो रे सी हबो वेरी गुड कोन हबो एटा सी नहीं फॉरगिवनेस भगवान को क्षमा मागिछंती रागी चंती रागी जाय कि रागी नाहंती हम रागी चंती बोली कहि परिबा ना बट एते टायर्ड हेचंती से विरक्ति मनोभाव को कुआ जाय आउटब्रस्ट ठीक अछि चिड़ी चिड़िया हे जिबा तो से समय से भगवान को क्षमा मागिछथि व्हाट डिड फादर गिलिगन डू आफ्टर हिज प्रेयर सरिला परे फादर गिलिगन कोन करचंती बोली प्रश्न आछि एते से दैछि कि ही वेंट टू विजिट द सिक मैन से विजिट करे पय जिबे बा जायछंती
ना he fell asleep on a chair से chair रे सोई पड़चंती he read the Bible पढ़चंती he ate his supper ना supper खाइचंती कौन हबो रे वेरी गुड कौन हबो एटा हाँ he fell asleep on a chair नहीं he fell asleep on a chair से chair रे कौन करचंती सोई पड़चंती what time of the day did Father Gilligan wake up को टाइम रे फादर गिलिगम को उठी चंती ओके से कहती को टाइम रे फादर गिलिगम वेक अप करचंती बा उठी चंती एठारे ऑप्शन देची कि मिडनाइट रे डाउन नून ना इवनिंग व्हिच टाइम टेल मी एवरीवन कोन हबो डाउन नहीं प्रातः सकाळे जा को जाउची डाउन रे से उठचन नेक्स्ट प्रश्न देखो व्हाट डिड फादर गिलिगन फ्योर अपॉन ओके वॉकिंग व्हाट डिड फादर गिलिगन फ्योर अपॉन वॉकिंग देखो एटा वॉकिंग ओके देखो ये कहबार कथा ये प्रश्न कोन को प्रश्न या पचाची व्हाट डिड फादर गिलिगन फ्योर अपॉन जते बेले से उठी चंती ठीक अछि व्हेन ही वाज वेक अप राइट जते बेले से उठी चंती तो से ता मंदटी भय आसी छानिया हो जायंती रीजन कोन दैट he had missed an important event किछि important event को से मिस करचंती that the sick man had died while he sleep से भाबिचंती कि से लोगोटी मर जाइतो मुझे तोळे सोई पड़ची that he had lost his faith निजर विश्वास हराई जंती ना that he was still dreaming ना से स्वप्न देखुचंती कोन हबो रे बी हबो नहीं कोन हबो बी हबो वेरी गुड that the sick man had died while I sleep से भाबिची मु जतोळे सोई पड़ची से समय से sick man टी कोन हेतबो मरी जाइतो सेति में ता मन टिके छानिया हेजी से टिके माने भाव प्रवण हो जायछि तापर देखो हाउ डिड फादर गिलिगन ट्रैवल टू द सिक मैन्स हाउस फादर गिलिगन किपरि ट्रैवल करचंती सिक मैन घर को ठीक अछि राइट एटा देछि ऑन द फुट पादरे जायचंती बाय हॉर्स बाय कैरियज ना बाय बोट कोथरे जायचंती कोन हबो गुड 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 कोथरे जायचंती कि हॉर्स रे जायचंती नहीं बाय हॉर्स नेक्स्ट देखो व्हाट डिड फादर गिलिगन सॉरी व्हाट डिड द सिक मैन्स wife say when she saw father Gilligan को कोन कहतले सिक्वेंस रो वाइफ जते बेले से तांको देखि छंती राइट why have you come काहे के आसलो थैंक यू फॉर कमिंग धन्यवाद फादर यू कम अगेन पुनी थरा आसलो फादर ना इट इज टू लेट बहुत विलंब कर देले कोन कहै छंती गुड कोन हबो एटा फादर यू कम अगेन फादर तुम पुनी थरे आसलो एक कथा कहै छंती नहीं नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट अछि हाउ लॉन्ग एगो had the sick man's die when father Gilligan arrived ओके माने फादर गिलिगन आसीबा पूर्वरु केते समय पूर्वरु सिक मैन कर मृत्यु हेथिला बोल प्रश्न अछि केते समय देबो हेबो एठे ए फ्यू मोमेंट्स एगो किछि मिनिट्स पूर्वरु हेछि an hours हेबो सेमती द नाइट बिफोर हेबो ना ही विल स्टिल अलाइव से ए पर्यंत बंची छी कोन हबो रे वेरी गुड 12 रो कोन हबो an hours एगो नहीं गोटे घंटा पूर्वरु तांकर देहांत हला बोली से कहै छथि व्हाट डिड द सिक मैन डू बिफोर ही डाई ओके अकॉर्डिंग टू द वाइफ को मत अनुसार सिक मैन जो मरी गले से केमिति मले बा से कहै छ व्हाट डिड द सिक मैन कोन कले बोली पचार साधारणतः डू अर्थ करबा ही प्रे प्रार्थना कले ही sang से गीत बोलिले ही स्वेप्ट ओके कांदी थिले से ना ही टर्न एंड डाई एज ए मेरी बर्ड कोन हबो रे ही टर्न एंड डाई एज ए मेरी बर्ड नहीं ही टर्न एंड डाई एज ए मेरी बर्ड नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रश्न देछि हाउ डिड फादर गिलिगन रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ द सिक मैन्स डेथ ओके फादर गिलिगन कर रिएक्शन कोन थिला जते बेले से सिक मैन कर डेथ विषय रे जानिबा को पहिले she was relieved she was in grief she was angry ओके समझ कोन देछि she was indifferent कोन हबो रे she was in grief नहीं she was in grief दुख करिसंती नेक्स्ट देख नेक्स्ट देछि what did father Gilligan realize upon hearing the wife story वाइफ रो स्टोरी सुनला परे से कोन रियलाइज करचंती
that he had been careless, से जने careless person थिले बोली, that he had been helped by God, भगवान को द्वारा से साहाय्य प्राप्त करछन्ती बोली से फील करछन्ती ना, that he needed rest, ताको रेस्ट दरकार बोली से अनुभव करछन्ती ना, that he had made a mistake, से गोटे मिस्टेक करछन्ती बोली से अनुभव करछन्ती कोन हबरे वेरी गुड 15 रो बी नहीं, that he had been helped by God. So this 16 number देछि, what did Father Gilligan do after realizing he had been helped by God, जेतबेले से जानि छन्ती भगवान को द्वारा बा प्रभु को द्वारा कोन होईछि कि से साहाय्य प्राप्त करछन्ती, एहा पर से कोन करछन्ती, he thanks the sick man's wife, से sick man's रो जो वाइफ थिले तांको धन्यवाद दैछन्ती ना, कंटिन्यू टू प्रे, कंटिन्यू प्रार्थना करछन्ती, he knelt down and gave thanks, आंठै छन्ती आ थैंक यू कहछन्ती भगवान को, he went back to sleep, से सोया पे जाइछन्ती तण कोन हबो आंसर दियो समस्ते कोन हबो रे हां कोन हबो he knelt down and gives thanks नहीं आंठे पड़ी चंती आ भगवान को धन्यवाद दैछन्ती। नेक्स्ट देखो, what did Father Gilligan say okay about God's nature, भगवान को प्रकृति को टाइप रो से एठारे कहछन्ती, भगवान को प्रकृति को जदि देखिबा ताले that he is vengeful, that he is merciful and caring, okay, that he is indifferent to human suffering, not that he is the unpredictable, कोन हबो कोन हबो रे, that he is vengeful, that he is merciful and caring, he is merciful and caring b नहीं, he is merciful and caring, कृपाशील दयाशील हम कह परिबा। नेक्स्ट देखो, how did God assist Father Gilligan according to the poem, एठारे God किपरि असिस्ट करिसंती, how did God assist the how did God assist Father Gilligan according to the poem, पोएम अनुसार से किपरि असिस्ट करचंती, by waking him up in time, ठीक समय रे ताको उठै दैछंती ना, by sending an angel to the एटा मॉनिटर हबा कथा, मॉनिटर द sick man, by giving him strength ना, by making the sick man recover, कोन हबो शिवानी, by sending नहीं an angel, okay minister देछि एटा monitor to the sick man नहीं, okay next प्रश्न देखो, what the metaphor is used to describe the God in poem, हम जदि एठा देखिबा गॉड को ने कि जो मेटाफर यूज करा जाय छै, राइट कोन मेटाफर यूज करा जाय छै एठारे ऑप्शन दै छी, शेफर्ड बोली को जाय छै एठारे ना, फादर बोली को जाय छै ना, ए किंग इन पर्पल रोब बोली को जाय छै ना, टीचर बोली को जाय छै, गॉड को मेटाफोरिकली जदि हमें यूज करबा, ओके मेटाफोरिकली जदि यूज करबा ताले एठारे कोन बोली यूज करा जाय छै को, शेफर्ड बोली यूज करा जाय छै गॉड को ना, फादर बोली यूज करा जाय छै गॉड को ना, ए द किंग ऑफ पर्पल रो बोली यूज करा जाय छै ना, टीचर बोली यूज करा जाय छै, कोन हबो एटा वेरी गुड, एटा कोन हबो किंग इन पर्पल रो नहीं, किंग इन पर्पल रो। नेक्स्ट देखो, what natural elements are the mention as the part of God's creations in this poem, को नेचुरल एलिमेंट्स को एठारे मेंशन करा जाय छै, भगवान जो तैयार छन संपूर्ण दुनिया को हना नहीं, ए पोएम रे को नेचुरल एलिमेंट्स गुडा के यूज करा जाय छै, राइट एटा माउंटेन एंड रिवर को यूज करा जाय छै, ओके स्टार्स एंड प्लैनेट को यूज करा जाय छै, ट्री एंड फ्लावर को यूज करा जाय छै, ट्री एंड स्काई को यूज करा जाय छै, कोन हबो गुड, कोन हबो एठारे कि स्टार एंड प्लैनेट कथा को जाय छै नहीं, स्टार एंड प्लैनेट कथा एथरे को जाय छै। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जो माने समस्त लाइक करो रे, ओके जो माने नुआ भी आछंती बा जो माने देखुचंती भी समस्त लाइक करो, ओके सांग साथी मान को शेयर करो, से माने मध्ये जोडी होंतु, डेली क्लास गुडा को होउची, जदि नुआ आछो चैनल को ताले सब्सक्राइब करो, ठीक अछि, जो माने ऐप डाउनलोड करना, हमरो ऐप रहे छै पिले, जो माने ऐप डाउनलोड करनो से माने जाय कि प्ले स्टोर रो आवर CHSE ऐप डाउनलोड करो, ओके आवर CHSE ऐप तुम डाउनलोड कर पारो प्ले स्टोर को, ठीक अछि। तो देखो, व्हाट डज द फादर गिलिगन से अबाउट गॉड्स कंसर्न फॉर हिम, एठारे फादर गिलिगन कोन कहछन्ती भगवान को नै कि दैट गॉड डज नॉट केयर अबाउट हिम, भगवान
तार केयर नियंती नाही, that God had pity on him, भगवान ता ऊपर कृपा भिक्षा करचंती ना, that God is indifferent to his suffering, जतबेले से कष्ट पाउचंती से समय भगवान न जानिला परी तांकर व्यवहार रही थाए ना, that God test him the constantly, कौन हबो had pity on him ना, हाँ कि नहीं, भगवान तांको ऊपर कौन करचंती कृपा करचंती. ओके, I am the new student, very good. Do your class regularly. Okay, next देखो, what lesson does the poem teach about the fate and divine's intervention? एठारे गोटे जिनस को what lesson does the poem teach? poem को lesson देउची about faith and divine the intervention, विश्वास आ divine, divine कहले कौन अलौकिक आम बुझीपर, हाँ कि नहीं, अलौकिक भगवान को नहीं आम बुझीपर. तो कौ जिन से कहना चाहती, द फेथ इज ऑफन द फटी द गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ ना, दैट द गॉड्स मर्सी एक्सटेंड इवन टू द वेरी एंड ओवरबर्डन ना, द ह्यूमन्स एफर्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन डिवाइन आर्ट. कौन हम आउथर कहीदेवी से कहते द लेसन डज, देखो द लेसन डज द पोएम टीच अबाउट द फेथ एंड डिवाइन इंटरवेंशन. से कहते ए लेसन टा किछि शिक्षा देउछि, बुझेला कि नहीं, गॉड एंड डिवाइन जोटा कह जायछि एठारे हम जदि फेथ विश्वास और डिवाइन, डिवाइन कहले एटा भगवान, भगवान को ऊपर विश्वास रखिबा, ए जिंस ए कविता रे अछि, बुझेला कि नहीं. किंतु ए कोन एमती तुमको टीचिंग देउछि कि हम जदि बेले भगवान को ऊपर हमर जो भरोसा रुहे तो या फल कौन हुए, आम जमी ईश्वर को आराधना कले आम गोटे आशा था कि आम दुख सुख असुविधा समय भगवान आमको साथ देवे, यही इंटेंशन था ना. तो यही कवितार कौन सेमती शिक्षा पाइबा बोली से कहते, फेथ इज ऑफन फॉरगेट दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ ना, द गॉड्स मर्सी एक्सटेंड इवन टू द वेरी एंड ओवरबर्डन, that humans efforts are more important than the divine arts. ऑनलाइन पिला को समझते बी, गुड गुड, 22 रो बी, that God help those who help themselves, नहीं भगवान समान को सहायता करंती जे अन्य को सहायता करया पई आगे आस्ते. नेक्स्ट देखो, what was Father Gilligan's primary duty as a priest? priest भावरे तांकर प्राइमरी ड्यूटी को जदि आमे देखिबा ताले तांकर प्राइमरी ड्यूटी कोन थला, कंडक्टिंग द मास. ओके, सेमती visiting the sequence and day, teaching the children ना, writing the sermons. कौन हबो रे, कौन हबो, very good, B, visiting the sequence and day. Okay, how does the poems describe the night? night एठारे किपरि describe करा जायछि. okay, night एठारे किपरि describe करा जायछि, right, the frightening and dark, a peaceful and steady, as cold and lonely, a busy and noisy. कुपरे describe हेछि को, good, B. कौन पूजा कौन पे क्लास असलु नो, as peaceful and steady, नहीं. नेक्स्ट देखो, what does the father Gilligan use for the support while praying? what does the father Gilligan use, कौन यूज करछंती. okay, the altar, chair, table ना his walking stick, कौन यूज करछंती रे, वेरी गुड, कौन यूज करछंती, कौन टेबल यूज कर, सॉरी चेयर यूज करछंती ना, हो कि नहीं, कौन यूज करछंती, चेयर यूज करछंती. नेक्स्ट देखो, what does the father Gilligan prayer and sleep symbolize? एठारे फादर गिलिगन प्रेयर करले आ सोई पड़ले, एटा कहा को सिंबलाइज करूची, his laziness, his despair ना his human limitation ना his faith, कहा को एटारे, हां
ह्यूमन लिमिटेशन मनीष कार्य करिवार गोटे लिमिट थाउची हाँ कि नहीं मनीष काम करिवार गोटे लिमिट थाउची से लिमिट बाहर केबे भी करि परिबो नाही सदा बेले जति भी काम करो तुम काम करिवो नो डाउट बहुत टायर्ड हैला पर तुम करि परिबो सेति में तो कहला कि आई हैव नो रेस्ट नो जॉय नो पीस पीपल डाई एंड डाई हाँ कि नहीं गॉड फॉरगिव मी भगवान मते क्षमा कर दियो मोर माय बॉडी कौन कहছে माय बॉडी स्पोकन टू आई मोर बॉडी मते साथ देउनी समथिंग एमती कोन इंग्लिश रे थिला ना तो कोन होबा एटा हिज ह्यूमन लिमिटेशन राइट हाउ डज द पोएम डिस्पिक्ट द रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन एटा केमिति ए पोएम टा डिस्क्राइब करिछि ओके ह्यूमन एंड गॉड को विषय रे बा ह्यूमन एंड डिवाइन सहित as distance and disconnected भगवान सहित हमर जो बंध संपर्क जो रही एटा डिस्टेंस रही और डिस्कनेक्ट रही ना as one of his constantly struggle as one of his care and intervention ना indifferent कौन हो गुड भगवान सर्वदा हमर कौन करंती केयर नियंती नहीं सी देखो व्हाट इज द सेंट्रल थीम्स ऑफ दिस पोएम एठरो मुख्य सारांश जदि आमे बुझिबा बुझेला कि नै सेंट्रल थीम्स ऑफ दिस पोएम कोन रे द इनएविटेबिलिटी ऑफ द डेथ मृत्यु निश्चित पावर्स ऑफ प्रेयर प्रेयर कर पावर विषय एठारे को जायछि द बर्डन ऑफ द पेरिशहुड जो प्रीस्ट अछि ओके प्रीस्टहुड रो तार बर्डन कथा एठारे को जायछि ना डिवाइन मर्सी एंड ह्यूमन द फर्टिलिटी कौन कुआ जायछि को भगवान को ऊपर जब हमें जदि विश्वास रखि थाउ नहीं इफ वी आर कीप फेथ ऑन गॉड हाँ कि ना आमे जदि भगवान को ऊपर कौन करबा विश्वास रखिबा देन आमे कौन पाइबा ईश्वरंकर डिवाइन मर्सी पाइ थाउ डिवाइन मर्सी नहीं कौन हबो डिवाइन मर्सी ओके नेक्स्ट देखो डिवाइन मर्सी नेक्स्ट देछि हाउ डज द पोएम ओके the portrait thus natural world को एठारे से केमती पोर्ट्रेट करचंती ओके एठा देछि ए hostile and unkind indifferent the as the reflection of the divine's beauty and care ना as the chaotic कोन हबो रे हां कोन हबो as a reflection of divine beauty and care नहीं okay next तक what the emotions does Father Gilligan feel most strongly throughout this poem माने को इमोशन को एठारे हमर फादर फील करचंती जॉय एंग्विश पीस एंड एंगर को समझते को इमोशन को से एठारे फील करचंती बी वेरी गुड एंग्विश irritating thought okay देखो what literary device is used एटा कौन literary device यूज करा जायछि को okay the most hours of eve संध्या समय रो कथा को जायछि संध्या समय जेतो एटा रिप्रेजेंट करा जायछि most hours of eve कहले हमें संध्या समय को बुझुते हां कि नहीं तो को literary device एटा यूज करा जायछि simile metaphor personification alliteration मेटाफोर कौन रे मेटाफोर नहीं नेक्स्ट देखो व्हाट डज द फादर गिलिगन हॉर्स सिंबलाइज हॉर्स को एठारे कहा सहित सिंबलाइज करा जायछि हॉर्स को कहा सहित सिंबलाइज करा जायछि से हॉर्स रे जाउतले ना हा कि नहीं हॉर्स रे जाउतले तण हॉर्स को एठारे कहा सहित सिंबलाइज करा जायछि सिमिली सहित सिंबलाइज हेछि मेटाफोर सहित सिंबलाइज हेछि ना सेमिति पर्सनिफिकेशन सहित सिंबलाइज हेछि ना अलिटरेशन सहित सिंबलाइज हेछि व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड ओके कोरे ऑनलाइन पिला आंसर दियो को लिटरेरी डिवाइस को एठारे यूज करा जायछि बी वेरी गुड मेटाफोर
व्हाट डज द फादर गिलिगन हॉर्स सिंबलाइज करा जाय एटा तो आउ देनी कि एटा आंसर कोन होई छी हिज स्ट्रेंथ कथा एटा सिंबलाइज होई छी ना फैटिग्यू ना हिज ड्यूटी एंड अर्जेंसी ना वेल्थ कौन हम हिज ड्यूटी एंड अर्जेंसी है कि नहीं हिज ड्यूटी एंड अर्जेंसी तब तक व्हाट डज द स्टार सिंबलाइज इन दिस पोएम स्टार कौन सिंबलाइज करछि द प्रीस्ट रो ड्रीम को सिंबलाइज करूछि द एंडलेस नेचुरल ऑफ द यूनिवर्स को सिंबलाइज करूछि ना गॉड्स वाचफुल आई को सिंबलाइज करूछि ना सोल ऑफ द डेड को सिंबलाइज करूछि कौन रे टेल मी एवरीवन व्हाट does the star symbolize it symbolize God's watchful eyes it symbolize God's watchful eyes eta bhagwan kar watchful eyes को symbolize करछि what is the tone of this poem एथरो जे हम देखिबा नै कि ए पोएम रो टोन कोन melancholic angry ना reflective and hopeful ना joyful hopeful and joyful नहीं कौन हम अरे यार रिफ्लेक्टिव हॉपफुल हम नहीं कि हाँ कौन हम रिफ्लेक्टिव हाँ नेक्स्ट देखो हु रोड द बलाड फादर ऑफ गिलिगन बलाड फादर ऑफ गिलिगन के रहते विलियम शेक्सपियर लिखछंती विलियम बटर येट लिखछंती ओके सेमती रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखछंती ना जॉन कीट्स लिखछंती हु राइट्स विलियम बटर येट नहीं के लिखछंती विलियम बटर येट नेक्स्ट प्रश्न देछि व्हाई डज फादर गिलिगन ग्रीव व्हेन कॉल अपॉन बाय द अनदर सिकमेन जते बेले जने अनदर सिकमेन ताको डाकी छंती हां कि नहीं से समय से को करछंती दुख करछंती व्हाई ही फील्स अनअप्रोप्रिएट ताको unappropriate feel he was overwhelmed by the numbers of the sick man dying now he is afraid of death now he thinks he is failing in his parish कौन हबो को ताकू बहुत काम करी करी से टायर्ड हे जाई छी नहीं तनु कोन हम he is overwhelming by the numbers of the sequence dying जो बहुत मात्रा जो सीक्वेंस गुडा थिले जो माने कार तो मृत्यु हो जाउतला कार तो देह असुस्थ होतला समस्त को अटेंड जेहेतु करथले सेति में से टायर्ड फील करचनी सेति में से मना कर देतले व्हाट डज द फादर गिलिगन मींस माय बॉडी नॉट स्पोक नॉट आई मो शरीर मते आ साथ देउने ए या कहबार तात्पर्य कोन ही वाज स्पीकिंग हिज स्लीप से सोया पे चाहतले ना हिज एक्सुलेशन कॉज्ड हिम टू द स्पीक out of tone he was speaking metaphorically ako metaphorically से यूज करचंती ना he was the possessed by the spirit कोन हबो को बी ह कि नहीं से बहुत हालिया होथले टाइड होथले सेति पे से कथा कहचंती नहीं नेक्स्ट देखो बी नेक्स्ट देखि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पारोज चिरुपिंग जेतेबेले स्पारो गुडाकर साउंड करा जाय स्पारो जेतेबेले साउंड करन यार सिग्निफिकेंट जदि हम बुझिबा कोन बुझिबा एटा सिग्नल द स्टार्स ऑफ द न्यू डे एटा गोटे नूतन दिन सॉरी द सिग्नल द स्टार्ट ऑफ द न्यू डे नूतन दिन रो एटा शुभारंभ बोली आ सिग्नल मिलुची ना इट रिप्रेजेंट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग रो आगमन कथा को जाय छी ना इट सिंबलाइज द फ्रीडम its significance hope and the renewal कौन हो बरे very good it signal the start of new days ये new day को signal देउछि नहीं next देखो next एठार देछि what does the phrase okay what does the phrase God cover the world with shade भगवान संपूर्ण दुनिया को कोन करचंती रे गोटे अंधकार मध्य रे घोड़े देचंती हां कि नहीं गॉड कोन करचंती संपूर्ण दुनिया को गोटे अंधकार मध्य रे घोड़े देचंती ए जो कुहा जाय छे एठारे एथिरु हम कोन बुझबा एम्प्लाइज गॉड
causes darkness and despair. God proven comfort and rest. God hide the truth from humanity. God brought him the storm. कौन हबो? गॉड काहेकि संपूर्ण दुनिया को घोड़े देछंती रे भगवान चाहंती कि समस्त व्यक्ति गुडा को कोन करंतु कि रेस्ट नियंतु नहीं सेति में से कोन करछन संपूर्ण दुनिया को घोड़े देछन तनो गॉड प्रोवाइडेड द कंफर्ट एंड रेस्टनेस सॉरी रेस्ट ओके नेक्स्ट देखो हाउ डज द सीक्वेंस डाई अकॉर्डिंग हिज वाइफ स्त्रींकर मतरे सिकमेनकर देहांत केमिति हेइथिला बोली सेठारे को जायछि तेणु कौन हम केमिति हेइथिला को हाँ पीसफुली आज मेरी आज ए बर्ड नहीं पीसफुली मरिथिले किंतु मेरी बर्ड जिपरि मुंडो बुलाई थाए सेपरि से मुंडो बुलाई के मरि जायतिला तापर देखो एटा दिया जायछि व्हाट रोल डज द सीक्वेंस वाइफ प्ले इन द पोएम सीक्वेंस रो वाइफ एठारे कु प्रकार रोल प्ले करिथिले सीक्वेंस रो वाइफ एठारे कु प्रकार रोल प्ले करिथिले बोली कहिछि कु प्रकार रोल हबरे एटा देछि शी इज एन ऑब्जर्वर ऑफ द मोस्ट मिराकिल से मिराकिल को देखिचंती ए रोल प्ले करचंती शी इज स्केप्टिक ऑफ दिस प्रीस्ट फेथ ना शी इज इंडिफरेंट टू फादर्स गिलिगन शी accused फादर गिलिगन ऑफ द नेग्लिजेंसी कोन हबो को वेरी गुड ए हबो कोन हबो रे ए हबो नहीं शी इज ऑब्जर्वर ऑफ द मिराकल्स ए जो मिराकल्स जो हेछि तो तार से ऑब्जर्वर थिले बोली को जाय कि एंजल आसी प्रे कर दैचंती आ जायचंती ए जो मिराकल रो से ऑब्जर्वर थिले से देखिथिले सब दृश्य नेक्स्ट देखो व्हाट डज द फादर गिलिगन फाइनल रियलाइजेशन सिग्निफाइड एठारे फाइनल रियलाइजेशन कोन थिला his lose his faith okay se vishwas horai thile the his ultimate despair he understand of the divine mercy na he doubt in god kon hobo good kon hobo अरे आंसर दियो कुआडे कुआडे गायब हो जाओ करी को ऑनलाइन पिले को मु देखुची ठीक अछि मु देखुची समस्त आंसर दियो कोन होबो his understanding of divine mercy नहीं से divine mercy को बुझी पारिथिले से divine mercy को बुझी पारिथिले what does the repetition of the हम जदि एठा देखिबा नै कि what does the repetition of the people die and die जो repetition है छी people die and die जो repetition है छी die and die बुझेला कि नै ए die and die को हम कोन बोली कहबा प्रतीक्षा आंसर दियो मा समस्त आंसर दियो कोन हबो the cycle of life it is the burdens of the pursuit na inevitability of death na the unending the natural of suffering kon hobo re नेम नियंतु अरे यार नेम नबी जे आज करंट कटिबार अछि बाबू को मोमेंट रे भी कटिबारे करंट बुझुचो ना नै सेति पे मु नेम नउनी नेम नले एक्स्ट्रा मते कहबा पड़िबो करंट पळेला आधा क्लास हेतु समस्या हबो बुझौछि ना नै से पावर कट अछि हम साइड रे आज ठीक अछि चलो तणो कोन हबो एटा हां कोन हबो व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द पीपल डाई एंड डाई एम्फसाइज हम जदि पीपल डाई एंड डाई को एम्फसाइज जदि बुझिबा ताले कोन हबो ऑन एंडिंग नेचुरल ऑफ सफरिंग unending natural of suffering ठीक अछि unending natural of suffering next देखो does the how does the setting contribute to the moods of this poem एठारे moods of this poem जदि हमें बुझिबा ताले किपरि अछि the rural landscape emphasize the isolation गोटे rural landscape कथा को जायछि गोटे रूरल कोले कोन रे गां हां कि नै क्षेत्र जो लैंडस्केप कथा से कथा को जाय स्टेरी नाइट्स डिवाइन प्रेजेंसी जो आकाश रे जो तारा गण देखा जिबा जागो केठा डिवाइन प्रेजेंसी तो कथा को जाय ना डार्कनेस क्रिएट ए सेंस ऑफ फियर ना अंधकार भय
आनी दे थाए बोली को जाय ना डाउन ब्रिंग ए होप कोन हबो को कोन हबो वेरी गुड बी हबो नहीं कोन हबो बी हबो द स्टेरी नाइट्स हाइलाइट द डिवाइन प्रेजेंस भगवान देखुचंदी बोली गोटे शब्दटे व्यवहार करा जायतला नहीं वाचफुल कोन हेटा भगवान देखि चाहती बोली शब्दटे व्यवहार करला हम आलोचना कले तापर देखो तेणु कौन हम द स्टेरी नाइट्स हाइलाइट्स द डिवाइन प्रेजेंस व्हाट इज इफेक्ट ऑफ द एंजल्स इंटरवेंशन इन दिस पोएम कौन इफेक्ट एठारे हम जानिया पाउचे इट शोज द fertilities of the human effort it highlight the god active role in human life it demonstrate in the randomness okay of the fat now it's emphasize the parts of the priest कौन हबो रे कौन हबो good b नहीं it highlights the god active roles in human life मनुष्यर जीवन रे हा कि नहीं भगवान कर भूमिका केते इंपोर्टेंट से जिनस एठारे को जाय ठीक अछि नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देछि हाउ डू द फादर गिलिगन फील आफ्टर रियलाइजिंग द एंजल्स हेल्प बाय हिम ओके फादर गिलिगन किपरि फील करचंदी जतले से जानि पाचंदी भगवान को द्वारा से सहायता पाइचंदी ग्रेटफुल एंड हम्बल ओके प्राउड एंड सैटिस्फाइड डाउटफुल एंड कंफ्यूज्ड ना एंग्री एंड द रिसेंटफुल कौन हबो को ग्रेटफुल एंड हम्बल नहीं ग्रेटफुल एंड हम्बल से फील करचंदी तणु फास्ट तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देछि व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ओके वर्क एंड रेस्ट एठारे पोएम कोन सजेस्ट करिछि वर्क एंड रेस्ट को नै कि से एठारे कहिछि कि वर्क इज मोर इंपोर्टेंट देन रेस्ट काम बहुत इंपोर्टेंट रेस्ट थारो रेस्ट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव वर्क गोटे भलरे काम करिया पय हेले हमको प्रॉपर रेस्ट नेबा दरकार बोली से एठारे कहिसंती ना वर्क एंड रेस्ट आर इक्वली अनइम्पोर्टेंट दीटा जगह आवश्यक नै मनुष्य जीवन रे रेस्ट इज ए साइन ऑफ वीकनेस जो जे व्यक्ति रेस्ट नै नै कि ताको को जाउची से दुर्बल लोक कोन बोली को जाय बी रेस्ट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव वर्क हमें काम करिया पय हेले प्रॉपर रेस्ट नेबा दरकार नहीं विदाउट रेस्ट रे हमें काम करि परिबा नहीं सो दैट रेस्ट इज नेसेसरी फॉर इफेक्ट वर्क नॉट वर्क इज मोर इंपोर्टेंट देन रेस्ट काम रेस्ट बेसी इंपोर्टेंट नुह तुम जब रेस्ट ही नेबनी ताले तुम ठीक से तुम काम ही कर परिबनी सो दैट रेस्ट नेसेसरी फॉर इफेक्ट वर्क तुमरो इफेक्टली बहुत भलो भाव रे तुम जदी काम करिया पय चाहउतो देन यू हैव टू टेक द प्रॉपर रेस्ट तुमको प्रॉपर रेस्ट नेबार अछि राइट नेक्स्ट व्हाट इज द मेसेज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ दिस पोएम कोन मेसेज देया पय से चाहंती ओके इट इज ए रेयर और unusual event it is everyday's an accuracy it is only for the earthly na it is sign of weakness कोन मेसेज देया पय चाहंती ए कविता रे बी इट इज एवरीडे एक्यूरेंसी एटा प्रत्येक दिन हबो भगवान कर कृपा भगवान कर दया हम प्रत्येक दिन पाइबा भगवान सदा बेला हमको देखि चाहंती हां कि नहीं तो तापर देखो व्हाट डज द फादर गिलिगन एक्सपीरियंस टीच अबाउट द ह्यूमिलिटी ओके ह्यूमैनिटी जा को जाउची एटा से कोन एक्सपीरियंस करचंती ट्रुथ ह्यूमैनिटी कम्स फ्रॉम मानविकता रु सत्यता आसी थाए acknowledging one's limitation humanity is necessary for the faithful humanity is a sign of weakness na something humanity not humanity should be avoided by the stronger कोन हबो को प्रथम देछि the truth humanity comes from the acknowledging one limitation humanity is necessary for this faithful humanity is signs of weakness okay humanity should be avoided by the strong कोन हबो एटा हबो ए नहीं कोन हबो ए नेक्स्ट देखो सोल लागी रे एटा
केतरे आस 50 ओके हाउ डज द पोएम रिसॉल्व द फादर गिलिगन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जो द्वंद्व रे थिले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो थिला तांकर से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को केमती से रिसॉल्व करचंदी राइट बाय शोइंग हिज फेथ इन एक्शन बाय providing him with rest the demonstrating divine support na in highlighting his despair kon habo by demonstrating divine support आज मैं यदि पिले ठीक अच्छे एपटे पावर कोट अच्छी तेणु मु नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास नहीं पारिबी नाही तेणु जो माने भी वीडियो देखुचंती रेगुलर क्लास रे जॉइन हो जांतु तम संग साथी मान को जॉइन करंतु यदि न आस्तिबो ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु समस्त गोटे गोटे लाइक करो ओके संग साथी मान को सहित शेयर करो यदि आप जे डाउनलोड करि ना हो से माने जाय कि प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर पारो आवर CHSE सेठारे रेगुलर बेसिस रे क्लास गुडा को पाइ जबो तुमे डे वाइज तमर मेंशन थिबो जो डेट रे जोटा क्लास हेची ओके जदि किछि भी प्रॉब्लम होची जानि परनो ताले मते पचारिबो तो मु कहि देबी इकोनॉमी बाबू इवनिंग रे हबो मॉर्निंग रे मु पूर्व रु कहिची एते गुडा प्रेशर होउची मते बुझेला कि नै तो सकाळे सब जिंस होबो नै मु पूर्व रु कहिची सकाळे तमर एदर एमआईएल हबो इंग्लिश हबो आउ एजुकेशन हबो या व्यतीत तमे किछि एक्सपेक्ट करोनी सकाळे बुझेला कि नै चारटा पांचटा क्लास एट ए टाइम इट इज नॉट ए पॉसिबल बुझौछु नै ठीक अछि काली संध्या बेले देखा हबो संध्या बेले जदी करंट रहिबो तो मु क्लास नेबी ठीक अछि काना पावर कट अछि केते बेले छाडीबे किछि गारंटी नै पुनी थोड़ा देखा हबा ओके रहिली।